कॉर्पोरेट आर में अब हम बात करते हैं ड्रीमफोक्स सर्विसेज की। अप्रैल 2008 में शुरू हुई कंपनी एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज देने का काम करती है, जिसमें लाउंज मैनेजमेंट, खाना पीना, स्पा, पैसेंजर्स और उनके सामान का एयरपोर्ट ट्रांसफ़र करना शामिल है। कंपनी के 120 देशों में करीब 1500 टच पॉइंट्स है। फिलहाल नई सर्विसेज लॉन्च करने के क्या है रोड मैप, क्या है आगे के प्लान्स, आउटलुक, इन सब पर स्वागत करते हैं कंपनी की चेयरपर्सन एंड एमडी लिबर्था पीटर कल्लत। लिबर्था, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट है आज, वो ये है कि एयरपोर्ट्स पर इतनी जो भीड़ हम देख रहे हैं, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़, जिस तरीके का ट्रैफिक हम एयरपोर्ट्स पर देख रहे हैं, क्लियरली उससे आपके बिजनेस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। यूजेज ऑफ लाउंज बढ़ चुका है, जो हमें समझ में आ रहा है पिछले 2-3 हफ्तों में। हॉलीडे सीजन भी है, तो टेल अस मोर अबाउट इट। क्या वाकई फुटफॉल्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, नेवर बिफोर, और किस तरीके का ये ट्रांसलेट करेगा फॉर द बिजनेस फॉर यू? Sure. Good afternoon. So yes, you're right. We have actually seeing a very good attraction going on at the airport, right? And both in terms of airport traffic as well as the lounge traffic as well. Because if the airport traffic is increasing, yes, it is good for DreamFolks because the lounge traffic and the other services are also getting benefited, right? So in terms of the numbers, I would say that yes, we have actually crossed the pre-COVID numbers in terms of the air traffic as well as the lounge business as well. Right. And further, what we are actually seeing that, yes, even the airports are ready for, taking this type of growth. And there are a lot of, I would say, in terms of adding more lounge spaces. So if you actually see, there are more and more lounges now going to come with extra space there. So yes, the airports are also, trying and seeing that to help the traffic the way it is growing, to ensure that, we try and give all the services what are there at the airport are, used by everyone. So the space of the lounges are increasing, the number of restaurants are increasing. In terms of the other facilities also, if you see, there are more and more other facilities or services which are getting added at all the major airports in India. श्योर, सो क्लियरली यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन है, अच्छी डिमांड है, जैसा आप बता रहे हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। बट मैं नंबर्स पर आना चाहूँगी। इन FY22 कंपनी ने अकाउंट किया था करीब 68% ऑफ ओवरऑल लाउंज एक्सेस वॉल्यूम इन इंडिया, एंड दैट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर। क्या टारगेट है बाय द एंड ऑफ FY23? ये नंबर आप कहाँ तक देखते हो बढ़ते हुए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फॉर द नेक्स्ट ईयर, सिंस बहुत सारे और एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डिमांड है और आप बातचीत कर रहे हैं मोर लाउंजेस के लिए? So I would say that yes, the growth factor would be the way we are growing right now. So it would be in the same lines. And yes, in terms of the way the airport traffic is growing, so this is directly proportionate to all our other services as well. So especially the lounge numbers. So the way we have been growing and the way we have actually shown our half yearly number, we will be proportionately growing in the same manner for this year. जिस तरह से ग्रोथ अभी तक देखी है पिछले साल, वही सिमिलर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपने उस पर बात की। बट FY24 में मैम, इफ़ यू कैन गिव अस अ सेंस कि कितने नए एयरपोर्ट्स में आप एक्सटेंड करेंगे अपने लाउंज सर्विसेज? इज देयर अ नंबर दैट यू कैन शेयर? So if you actually see presently also, we have 100% coverage across all the airports in India. So as and when there are new airports coming in, so obviously it is, I would say DreamFolks requiring the lounges. Actually, the lounges need DreamFolks. So the moment the lounge is getting operational, I would say that the operators first get in touch with DreamFolks because they know that it is DreamFolks who is actually driving the traffic. So more than 80% of the volume today, if you see major airports, or especially the larger airports, it is DreamFolks which is driving the traffic. तो जैसे जैसे airports open होते हैं या lounges open होते हैं, DreamFolks उनके पास approach करने से पहले lounge operators DreamFolks को approach करते हैं, और actually it is the other way. They actually check with us that कि whether that particular location or that city they should actually operate or they should actually open the lounge, and what would be the numbers. So
yes, the number of lounges coming up or number of airports growing, it would be an addition for DreamFolks. Okay, यहाँ पर एक एडिशन होगा यहाँ पर DreamFolks के लिए जैसे जैसे नए एयरपोर्ट्स आएंगे. क्लियरली जस्ट टू गिव अस अ सेंस, हर एक नया लाउंज जो आप खोलते हैं उसका क्या मायने होता है फॉर द नंबर्स, इफ़ आई वर टू से, कितना वो एडिशनल रेवेन्यू लाता है, और इट्स अ केस टू केस बेसिस, बट बाय एंड लार्ज ऑन एन एवरेज क्या मायने होते हैं फाइनेंशियली? एक लाउंज खुलने का मतलब क्या होता है आपके लिए? So actually, I would say that, if you see right now also, it is majorly the metro cities which are the large contributors for the numbers, right? So in case if there are, a lounge opening in tier 2 or tier 3, I would say that it is not immediately we start seeing the contribution, but it takes time that over the period, maybe few months or few quarters, we would see that, depending which city it is and what number of flights from that particular airports, those are the factors which will actually, so I would not be able to say directly that, one particular city where it is going to open, what impact it will be. So city to city, and also, how many number of flights are actually from that particular airport, those are the factors which will actually impact. And I would say that yes, large contribution is from the larger cities where the number of flights are higher, compared to a tier 2, tier 3 cities where the number of, flights are also very less. So the percentage would be lower at the initial or at the beginning, but over the period, yes, they would start contributing to the business. But ma'am, मैं आपसे क्विक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी, एक तो आप मार्जिन्स कैसे बेहतर करेंगे आगे सर्विसेज के थ्रू? आपको लगता है कि आपके जो करंट मार्जिन्स है उससे मार्जिन्स और बेटर हो सकते हैं? क्या बैंड है जिसमें आप ऑपरेट करेंगे? एंड मार्जिन को बेटर करने के लिए आर देयर एनी स्ट्रैटेजीज दैट यू आर कमिंग अप विद? कुछ और नए सर्विसेज और इनोवेशन आप एक्सपैंड करना चाहेंगी? Sure. So if you actually see in terms of the services, we have actually added completely end-to-end services जो है एक ट्रैवलर की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम मीट एंड एसेस से लेके एयरपोर्ट ट्रांसफर, स्पास, F&B, ये सारे सर्विसेज हमने ऐड किए हैं. तो हर एक सर्विसेज के एक्चुअली इफ यू सी, आई वुड से मार्जिन्स वेरी, हाउएवर आवर टोटल मार्जिन व्हेन वी एक्चुअली कंसिडर, we are trying and maintaining in the same manner. So we are trying to ensure that we do not, reduce the margin and especially as a strategy, we are trying to say that, we will try and maintain the margin because the way the numbers are growing for us. So we are ensuring कि जितने services हम दूसरे add कर रहे हैं, तो उसके साथ भी, when we try, the take rates are differing from service to service. However, the margins are also differing. The margins are also different. It is not the same for all the services. However, overall, when we actually are considering it, we are seeing that we try and maintain the margins in our overall business. Okay, maintain करेंगे margins, यहाँ पर effort यही रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमें क्विक टेक देने के लिए. किस तरीके का बिजनेस है, डिमांड है और उसका क्या मायने है फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड. ऑल राइट, तो ये थे टॉप मैनेजमेंट ऑफ ड्रीमफोक्स सर्विसेज हमसे बातचीत करते हुए. स्टॉक में 1.5% का इस वक्त उछाल, बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर. आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी. बने रहिए हमारे साथ.